वेलकम टू माय चैनल इम्बाइब। और आज हम लोग केमिकल इक्वेशंस एंड हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन ये टॉपिक्स कवर करेंगे इस वीडियो में। तो केमिकल इक्वेशन, ये जो टर्म है केमिकल इक्वेशन, इज़ शॉर्ट इन फॉर्म फॉर केमिकल चेंज। किसी भी केमिकल चेंज का एक शॉर्ट इन फॉर्म जैसे हम लिखते हैं उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। Chemical equation shows the result of chemical change in which the reactants and the products are represented. इसका मतलब ये है कि केमिकल इक्वेशन ये बताता है कि रिज़ल्ट क्या है किसी केमिकल चेंज का, या फिर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या हैं और कैसे रिप्रेजेंट किए जाएंगे। सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हम एलिमेंट्स को हम लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, एंड फॉर्मूले के फॉर्म में हम कंपाउंड को लिखते हैं। ठीक है, अब बेसिकली आते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई राइट एन इक्वेशन NH4OH प्लस HCl gives NH4Cl प्लस H2O। ये इक्वेशन, इसमें जितना भी लेफ़्ट हैंड साइड में हमने लिखा हुआ है, जितने भी सब्सटेंसेस, वो क्या है, वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। और ये है हमारा राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। जितना भी एरो के राइट हैंड साइड पे है वो क्या है, उन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं। और ये जो एरो है, दिस एरो रिप्रेजेंट्स या इंडिकेट्स कि यील्ड कितना है, प्लस इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, कि इक्वेशन की डायरेक्शन क्या है। सो बेसिकली जो रिएक्टेंट्स हैं हमारे, वो सब्सटेंसेस है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो सब्सटेंस फॉर्म होते हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ केमिकल चेंज, उन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब चलिए आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हम केमिकल इक्वेशंस के देख लेते हैं। अभी पहला एग्जाम्पल तो यही है। सेकंड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं अगर फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्टेंट है और दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, तो 2PbNO3 होल ट्वाइस 2PbO प्लस O2 प्लस 4NO2। सो बेसिकली ये रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एक ही रिएक्टेंट है और दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, दो या तीन प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे ही और भी कई सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। अब आते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन टॉपिक पे। तो बैलेंसिंग क्या होता है और हम क्यों करते हैं। तो पहली बात तो एक बैलेंस इक्वेशन होती क्या है। तो बैलेंस इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट का सेम होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। दैट मीन्स साइड ऑफ द रिएक्टेंट्स पे भी एंड साइड ऑफ द प्रोडक्ट्स पे भी। फॉर एग्जांपल अभी अभी हमने एक इक्वेशन ली थी NH4OH प्लस HCl gives NH4Cl प्लस H2O। यहाँ पे हमें ये देखना होता है, एक बैलेंस इक्वेशन वही इक्वेशन होती है जहाँ पे जितना भी लेफ़्ट हैंड साइड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं सब सेम होने चाहिए राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स। अब अगर देखें एक इक्वेशन को बैलेंस क्यों होना चाहिए, वाई शुड an equation be balanced? All equations must be balanced in order to comply with the law of conservation of mass. तो law of conservation of mass क्या है। This law explains that mass is
mass or matter is neither created nor destroyed in the course of chemical reaction. कोई भी chemical reaction हो रही होती है तो उसमें matter जो है ना ही create होता है ना ही destroy होता है इस पूरे reaction के process में, जब कोई chemical reaction हो रही हो. अब जो है अगर कोई unbalanced reaction है, an unbalanced reaction would imply that atoms have been created or destroyed, right? So basically अब equation को बैलेंस कैसे करते हैं, तो कोई डेफिनेट रूल नहीं है गवर्निंग द बैलेंस ऑफ एन इक्वेशन, और इट इज़ जनरली बैलेंस्ड बाय either trial and error method or partial equation method. In order to balance an equation, the point to be remembered is that the formula of the reactants and products in an equation are fixed होने चाहिए, ठीक है, and hence an equation can be balanced by taking appropriate numbers of the atoms, ठीक है, and molecules of the reactants and the products concerned. Now अगर हम इस equation को ही balance देखें, अगर हम चेक करें कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, what we'll do is we'll write the number of atoms. We'll write the number of atoms on both the sides. For example, we have nitrogen, hydrogen, oxygen and chlorine. So how many atoms can you see of nitrogen over here? Equal to 1. You can write it over here. Hydrogen we have 4 over here and 1 over here, equal to 5. No, 6. Here also 6. Now oxygen we have 1 and chlorine we have 1. Now we'll see over the right hand side whether the atoms are same in number or not. We have the same atoms over here too. Nitrogen we have 1, that means nitrogen is balanced. Hydrogen we have 4 here and 6 over here. Chlorine we have 1, oxygen we have 1. Now match over here. Nitrogen we have 1 on both the sides, hydrogen we have 6 on both the sides, oxygen we have 1 on both the sides, chlorine we have 1 on both left hand side and the right hand side. That means the atoms are balanced, or the elements present are balanced on both the sides of the reaction. This shows that this equation is balanced. Now we will take another example in order to clarify your concept of balancing the reactions. Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2. You have to check whether this reaction is balanced or unbalanced. So I have told you to write the atoms present on both the left hand side and the right hand side of the equation, which are as follows: zinc, hydrogen, sulfur and oxygen. You'll write here the number of atoms in the reactants. Zinc here is 1, hydrogen is 2, sulfur is 1, oxygen is 4. Now on the product side, or the right hand side, zinc here is 1, hydrogen is 2 in number, sulfur is 1 and oxygen is 4. So basically this reaction is also balanced. Why it is balanced? Because the number of atoms
present in the left hand side and the right hand side are same. Now let us try to balance another reaction, which is as follows. Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2. Now here on the left hand side we'll write every atom present on both the sides first of all, that is iron, hydrogen and oxygen. Now we will try to write the number of atoms present on both the sides of the reaction. Iron here is 1 on this side, hydrogen is 2, oxygen is 1. Whereas on the product hand side we have iron equal to 3, hydrogen equal to 2 and oxygen equal to 4. So basically now we can see here that it is an unbalanced reaction, and here we have to balance this reaction. How you will try to balance this reaction is you will make sure that the number of atoms present on the left hand side and the right hand side should be the same. Here you can see that on the right hand side or the product hand side you have 3 iron, whereas here you have just 1 iron. One more thing you have to remember while balancing the reaction: in order to equalize the number of reaction, it must be remembered that we cannot alter the formula of the compounds, right? We will not alter the formula of the compounds. For example, if this is iron, we will not add 3 over here. This will be wrong. But we will write 3. How we will write 3 is, for example, here you need 3 iron more in order to balance this reaction or balance the element iron, right? So we will add 3 or multiply or write coefficient 3 for iron. Okay, to balance iron atoms we can put coefficient 4 as 3 Fe and not Fe3. Okay, now next, how we will balance the hydrogen atoms? Now you will see that hydrogen here is 2 on the reactant hand side and the product hand side. Both the hydrogen atoms are balanced, but oxygen here is 1 and on the product side is 4. So you need to equalize the number of atoms for oxygen. So to balance oxygen atoms we can put coefficient as 4 over here, right? Can we do that? We'll multiply it by 4. So I have added 4 in front of H2O, right? Now we'll see that and remember that we have added it in the coefficient place and not we have written as H2O4. We have not written H2O4, right? We can't change the chemical formula of the compound. Now partially the balance equation becomes 3Fe 4H2O and Fe3O4 plus H2. Now you can see after adding 4 over H2O, you can see that hydrogen has now become 2 into 4 equal to 8 on the reactant hand side, and here the hydrogen number is 2 on the product hand side. Now what we can do to balance hydrogen atoms is you will again multiply 2 into 4 over here and add 4 in the coefficient place of H2. Now is it balanced? 2 into 4 is 8. 8 hydrogen in the product hand side, and left hand side or the reactant hand side you have 8 hydrogen.
Now you can observe that every element or atom is balanced in the product and the reactant hand side. Now this equation is balance. So what is the balance reaction of the reaction we wrote in the beginning is plus 4H2. So this is the complete balance reaction of the above reaction which I wrote. If you want to check whether this reaction is balanced or not, you can again count the number of atoms. So by now, I think the concept of chemical equation and balancing chemical equation is being clarified by me. Thank you so much. If you have any questions regarding today's concept, you can ask me in the comment section. Thank you so much. Subscribe my channel, like, share and comment.